हेलो स्टूडेंट्स, आज आम किसी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवा आउ किसी प्रॉब्लम अच्छी जो थी कि आम वेरिएबल सेपरेबल को डायरेक्ट न करके रिड्यूस करी करिया। सो लेट अस स्टार्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। द क्वेश्चन थिबो सॉल्व d square y by dx square is equal to 6x plus sec square x, राइट। तो या को हम किंतु सॉल्व करिए। ये जो प्रॉब्लम के अछि सेकंड ऑर्डर काहे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव इजी बहुत इजी देखि के होछि। सो व्हिच इंप्लाइज दैट d square y by dx square जहां को हम लिखि परिबा dy dx of dy by dx which is equal to 6x plus sec square x, right? dy by dx of dy by dx is equal to d square y by dx square. Again dy by dx जेटा साइड चेंज हो लेफ्ट साइड अछि और राइट साइड को ताको हमें इनवर्स बोलबो आउ जेटा डेरिवेटिव साइड चेंज हो से इंटीग्रेशन हे जिवो काहे कि हम जानि छु जे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन both are inverse to each other. So now which implies that dy by dx equal to d by dx separate side के लिए इंटीग्रेशन है जो इंटीग्रेशन ऑफ 6x plus sec square x dx की dx का डिवीजन मोड रखला सेपटे मल्टीप्लिकेशन मोड रखो नॉट मल्टीप्लिकेशन द मोड बोल। Now this implies that dy by dx is equal to 6x integration 6 constant x integration x square by 2 जो कि हमें x to the power n plus 1 by n plus 1 फॉर्मूला पुट करछे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x को हमें लिखिबा tan x प्लस c1 काहे कि डबल डेरिवेटिव अछि फर्स्ट कांस्टेंट को c1 नेबी आउट कांस्टेंट को c2 again which is even कौन करि परबी वेरिएबल सेपरेबल करि परबी। again dy is equal to 3x square ये कटिला 3x ला प्लस tan x प्लस c1 मुझे पावर दे देली ऑफ dx। तो एटी वेरिएबल सेपरेट है अछि। now solving this equation एप्लिकेशन को सॉल्व करबी टेकिंग और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स integration of 3x square plus tan x plus c1 whole of dx. Okay, now what's the last line? Integration of dy is y is equal to 3 into x square integration like x cube by 3 plus tan x integration log sec x, okay, plus c1 integration c1 at constant c1 into integration of dx this means c1x plus जे कोन इंटीग्रेशन हम गोटे कांस्टेंट ऐड करे पड़िबो दिस इज c2। ओके ये 3 कैंसिल हो गया और लाइन में लिख परिबा। सो y is equal to x cube plus log sec x plus c1x plus c2। yes, this is your solution. This is your solution, right? Video pause करो और स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम d square y by dx square equal to cos x minus sin x. So same procedure d by dx of dy by dx equal to cos x minus sin x, which implies that dy by dx equal to cos x minus sin x dx. Okay, now integrating both sides it dy by dx में पाइछि this of this so ये इंटीग्रेशन है जी तले मो dy by dx करबी काहे कि dy by dx का साइड चेंज है जी
cos x ର इंटीग्रेशन होची sin x आउ माइनस sin होची sin x ର इंटीग्रेशन होची minus cos x plus c1 first constant will be c1, which implies that dy by dx is equal to sin x plus cos x plus c1 plus c1. वर्तमान वेरिएबल सेपरेबल करी dy is equal to sin x plus cos x plus c1 all of dx. Again integrating both sides, which implies that integration of dy is equal to integration of sin x plus cos x plus c1 of dx, right? Which implies that integration of dy is simply y is equal to sin x integration होची minus cos x integration होची sin x plus c1 integration होची c1 into x आ गोटे कांस्टेंट ऐड करिया पड़िबो which is equal to plus c2, right? This is answer. So next problem, x minus y whole square dy by dx equal to a square. एठी मु चाहिए डायरेक्टली वेरिएबल गुडा सेपरेट कर पारि काई केटी a minus b whole square फॉर्मेट अछि a square plus b square minus 2ab minus 2x into y. So एई बळे केस रे हम कोन करू ना ताको को reduced variable separate. Okay, so reduced variable separate means मु कोन करबी ना एठी रिड्यूस करबी जोटी को इजीली आउट थर्ड वेरिएबल लेबी जोटी मु इजीली वेरिएबल गुडा को separate कर पारे. Now what's in the rules? It is starting the solution रे we can write let move x minus y को नेली z आउट थर्ड वेरिएबल लेबी let x minus y is equal to z. तापरे with respect to x ताको मु डिफरेंशिएट करबी. So dy by dx of x minus y is equal to dz by dx, d by dx of z. d by dx of x minus y, d by dx of x is 1 minus dy by dx is equal to dz by dx. Okay, तो dy by dx रो वैल्यू हमने बात करी dy by dx is equal to 1 minus dz by dx. dy by dx रो वैल्यू ए वैल्यू टा को ए पुट करिए केते है 1 minus dz by dx. x minus y रो केते अछि z. Okay, we have next line में लिख पारे we have z square into dy by dx लिख ली या z लिख ली z square 1 minus dz by dx is equal to a square. Okay, which implies that 1 minus dz by dx is equal to a square by z square. You see, which implies that dz by dx गोटे साइड रे जी तो मु dz by dx केते पाइली ना मु पाइली 1 minus a square by z square. Okay, dz by dx equal to 1 minus a square by z square. और outline लिखो सी dz by dx is equal to z square minus a square by z square. वर्तमान मु z गोटे साइड ली पारी और x गोटे साइड ली पारी मोर से फॉर्मेट रे पड़े ठीक अछि. So next फॉर्मेट which implies that z square by z square minus a square dz ठीक अछि. एटा मु एपट लेफ्ट साइड ले और dx को राइट साइड ले is equal to dx. ठीक अछि. Again integrating both sides. वर्तमान both side integrate कर पाएंगे which implies that integration of z square by z square
माइनस ए स्क्वायर dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक अछि यार इंटीग्रेशन मु करी सेही मेथड माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर करी तले मु इजीली कर करी और हमें ब्रेक डिवाइड करके कर। So which implies that integration of z square minus a square plus a square numerator part only divided by z square minus a square dz is equal to integration of dx। ये गोटे टर्म this by this plus this by this ताले z square minus a square by z square minus a square is 1 plus a square by z square minus a square यार तो इंटीग्रेशन यहाँ करू से dz is equal to integration of dx। ठीक है so integration of dz 1 into dz this is simply z मोटी लिखी दो आउटलाइन इंटीग्रेशन ऑफ dz प्लस यार इंटीग्रेशन s स्क्वायर को बाहर में a स्क्वायर into इंटीग्रेशन ऑफ dz by z square minus a square is equal to integration of dx। Here again we have integration of dx by x square minus a square formula बना सी 1 by 2a into log x minus a by x plus a plus c ये फॉर्मूला पुट करेंगे। मो पास dz रे इंटीग्रेशन ला z plus a square into 1 by 2a log z minus a by z plus a is equal to dx रे इंटीग्रेशन केते x plus केते c। ठीक अछि तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हे सारछि मु फाइनली कोन करबी ना तो z अछि z जगह मु कोन पुट करबी x y देले मोर प्रॉब्लम सॉल्व ला। तो मु एटी z जगह लिखली x y प्लस ये रहि गला a by 2 log x plus sorry z is x minus y minus a by x minus y plus a magnitude is equal to x plus c। Yes, this is our solution। Okay, लिखी दिया बोल से एडे हम आउटलाइन सॉल्व कर परबा x x बोथ साइड में कैंसिल कर परबा कैंसिल कर ले परबो y को आउट साइड ní ଯିବା तो ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ which implies that a by 2 log x minus y minus a by x minus y plus a equal to y plus c। okay ताको इनते भी लिख दिया so this will be your answer। ठीक है the next problem solve cos of x plus y dy is equal to dx। so first हम dy by dx लिखिছি solution ले this solution we have dy by dx is equal to 1 by cos of x plus y एटी भी वेरिएबल सेपरेबल हम डायरेक्टली कर परिबनी ताको रिड्यूस करे ताले मु कोन करबी सेही मेथड x plus y रे मु गोटे थर्ड वेरिएबल लेट और कोटे x plus y is equal to z। now differentiating with respect to x both sides which implies that 1 dy by dx of x1 this is dy by dx is equal to dz by dx। तो मु dy by dx रेस बोथ साइड को which implies that dy by dx is equal to dz by dx minus 1। the same method मु जो dy by dx अछि ए वैल्यूटा पुट करी आ 1 by cos of x plus y जगह z पुट करी। now we get dy by dx लिखी dz by dx minus 1 equal to 1 by cos z। तो ये केवल वेरिएबल सेपरेबल करिया पाए which implies that dy
dz by dx is equal to 1 plus 1 by cos z, right? Outline you see, which implies that dz by dx is equal to cos z plus 1 by cos z. Okay, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଭେରିଏବଲ ସେପାରେବଲ କରିପାରିବି, ଗୋଟେ ସାଇଡ x ଗୋଟେ ସାଇଡ z, which implies that cos z dz divided by cos z plus 1 equal to dx. Now integrating both sides, which implies that integration of cos z dz by cos z plus 1 dx is equal to integration of dz is equal to integration of dx. cos z अच्छे से plus 1 minus 1 फॉर्मेट मैं लिखी दूँ इसका तो cos z plus 1 minus 1 by cos z plus 1 यार इंटीग्रेशन या ब्रैकेट दे दो बेटर होगा dz is equal to integration of dx. So cos z plus 1 by cos z plus 1 is 1 integration of 1 by 1 minus 1 by 1 plus cos z or cos z plus 1 dz is equal to integration of dx, right? Which implies that integration of outline is 1 minus 1 by 1 plus cos z, 1 plus cos z ro 1 plus cos z is equal to 2 cos square z by 2 cos 2z plus c 1 by 2 cos square z by 2 dz is equal to integration of dx. Okay, now which implies that integration of 1 minus 1 by 2 1 by cos square z is x square z dz is equal to again integration of dx. प्रथम मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dz is simply z minus 1 by 2 into integration of x square z is tan z divided by x square z by 2. This is not, this is x square z by 2, right? x square z by 2 1 by 2 cos square z by 2 is x square z by 2. So x square z by 2 integration la tan z by 2 divided by derivative of z by 2 divided by half. Divided by half means into 2 by 1, right? Is equal to dx integration x plus c. Is it clear? That 2 of 2 cancel होगा, which implies that z minus tan z by 2 is equal to x plus c. तो मुझे फाइनल लाइन में लिखी पड़ेगी z जगह कौन पुट करेगी x plus y. तो which implies that x plus y minus tan of x plus y by 2 is equal to x plus c. Okay, we x cancel out c, so which implies that y is equal to tan of x plus y by 2 plus c. So ये है हमारा सॉल्यूशन. Next problem, solve dy by dx plus 1 is equal to e to the power x plus y. Okay, the solution so let x plus y is equal to t. So dy by dx of x is 1, or which implies that 1 plus dy by dx is equal to dt by dx, right? Which implies that dy by dx is equal to dt by dx minus 1. ताली dy by dx को फॉर्म put कर देंगे. Therefore we have
by dx minus 1 plus 1 is equal to e to the power t. ये कैंसिल करना, which implies that dt by dx is equal to e to the power t. Okay, which implies that dt by e to the power t is equal to dx. Variable separate. Next लिख पारिया हमें, which implies that e to the power minus d dt is equal to dx. E to the power 1 by e to the power t equal to e to the power minus t, which implies integrating both sides, minus e to the power e to the power minus d dt, integration of e to the power minus d dt is equal to integration of dx. Integration of e to the power minus d dt is minus e to the power minus t, okay, which is equal to x plus c. तो यहाँ पर हमें minus 1 by e to the power t is equal to x plus c भी लिख पारिबा, और which implies that minus 1 is equal to e to the power t into x plus c भी लिख पारिबा, which implies that minus 1 is equal to e to the power t ର value x plus y भी put कर पारिबा into x plus c, बाद अब गोटे लाइन में लिख पारिबा, which implies that e to the power x plus y all into x plus c plus 1 equal to 0. ठीक है, ये है जो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल किसी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन गुड़ा खातार लिखियो, देखी ताको बुझिया चेष्टा करले बोल से बुझ परिबो. ओके, तो नेक्स्ट क्लास रे हम किसी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विषय रे डिस्कस करबा. ओके, थैंक यू.